विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च टू इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी कंपोनेंट 1 के अंतर्गत बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को प्राप्त रिसर्च कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम UGC स्ट्राइड के सेकेंड बैच के इनॉग्रेशन के इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे परिवार के मुखिया, हमारे क्रीड़ा स्रोत माननीय कुत्ती जी का हम सभी लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे सरल हृदय मृदुभाषी हम सबके प्रिय डीन फैकल्टी ऑफ साइंस and also the convener of this program, Professor M.M. Singh sir, and he is presently the finance officer in charge also. We also welcome to Professor M.M. Singh sir. This program is not a one-man driven program. Definitely this is a program of teamwork, and there is more than 25 faculty members of different streams who are the core committee members, and few of them very important core committee members are present right here. So we welcome to all the core committee members on this occasion. Few of the students of the previous batch also, they are present here. We had invited them for just receiving the certificates, and the newly admitted students, you are also very warm welcome from all of us. मैं इस अवसर पर थोड़ा सा इस प्रोग्राम के बारे में इनिशियली आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद जो है वो कल हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम आपको पूरा डिटेल में इस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। कोई भी आगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की टीचिंग शुरुआत करने से पहले इसका हर एक कंपोनेंट आपको प्रॉपर्ली समझाया जाएगा। तो सब कुछ आपसे हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे इस प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर एम सिंह सर से अनुरोध करूंगा कि माननीय कुलपति जी को फ्लावर बर्ड्स से प्लीज। Now this is I request Dr. Ramveer Singh sir to kindly welcome our finance officer in charge in the Dean Faculty of Science, Finance sir. It is indeed this guidance that we are doing what we can do our best. Now again I will request to our members to kindly inaugurate this session with पुष्पांजलि करके मां सरस्वती जी के प्रोग्राम से लोग शुरुआत करेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बताते हुए मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम में टोटल 4 मॉड्यूल हैं, और यूजुअली जो इस प्रोग्राम की जेनेसिस थी, जो स्टिमुलस था जिससे कि हम लोग कोई प्रोजेक्ट हमने लिखा और लिखा, एंड वी आर प्राउड कि पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी ही एक ऐसा विश्वविद्यालय रहा जिसको कि जो है इस स्ट्राइड कंपोनेंट 1 के अंतर्गत ये प्रोग्राम मिला। और जो इस प्रोग्राम की जेनेसिस रही वो ये रही कि अभी मैं 2019-20 की ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन पढ़ रहा था रिपोर्ट, उसमें अभी भी अराउंड 79% जो लोग अंडर ग्रेजुएट में इनरोल होते हैं उसमें से लेस देन 0.5% पीपल हैं जो PhD के लिए जाते हैं। लेस देन 0.5% लोग। इसकी वजह क्या है? शायद हो सकता है ये कि लोगों को रिसर्च फील्ड एक टफ करियर चॉइस लगती है। शायद ये हो सकता है कि लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। शायद
लोग ये मानते हैं कि ये इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एंड्योरेंस चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो कहीं ना कहीं उनमें कुछ रिसर्च की स्किल डेवलप करने की आवश्यकता है, या उनको थोड़ी सी रिसर्च की प्रोसेस को समझाने की आवश्यकता है राइट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में। तो ये चीजें देख करके हमको एक स्टिमुलस मिला और हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया। और उसमें 4 कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत आपको पहले जो है वो मॉड्यूल 1 के अंतर्गत आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद मॉड्यूल 2 में आपको एक पूरा 15 डेज की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉड्यूल 3 में आपका एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आपको एक 6 महीने का प्रोजेक्ट करना होगा, और मॉड्यूल 4 में आपको उस डेटा प्रेजेंटेशन के लिए कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट कराया जाएगा। बाकी हम डिटेल कल और डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या और चीजें आपको दी जानी है। मैं हमारे कन्वीनर से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आपने आशीर्वचन प्रदान करने का। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, जैसे कि डॉक्टर सर ने कहा है, तो अंडर हिज एवर गाइडेंस दिस थिंग्स कैन बी डन। और प्रयास जो हम लोगों ने जो शुरुआत की कोशिश की वो भी सर की गाइडेंस की वजह से ही सब कुछ हुआ है। और हमने इसके लिए मिलकर स्ट्रगल की और ख़ास तौर से इसके लेखा जोखा इसको लाने के लिए सबसे मेन जो मुख्य जो आदमी है वो है हमारा डॉक्टर सर। आप सबको जानते हैं, सभी आप लोगों के साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं सभी प्रोग्राम्स के बारे में, और ऑल द न्यू थिंग्स टू बी हैपन इन द यहाँ पर इनोवेशन सेंटर में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहा है मैंने हम स्ट्राइक के अंतर्गत ही हो रहा है। और इसमें सर ने जो कहा है इसमें हमारा एक बैच शुरू हो गया है, वो भी ऑनरेबल वाइस चांसलर सर की मदद से हम लोगों ने समय पर ही शुरू हो पाया। हम लोग बल्कि हमारे हाथ में पैसा नहीं था तब सर ने कहा शुरू कर लो, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। एंड इसमें जो 6 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ प्रोग्राम्स है ये, तो इसकी वजह से हमने समय पर शुरू किया है। खैर एनीवे लॉकडाउन की वजह से हम लोग को काफ़ी मुश्किलें जो हमने सामने किया है। इसके बावजूद भी नंबर ऑफ लेक्चर्स जो हम लोग ने जो सोचा था, हम लोगों ने प्लान किया था ऑफलाइन, इससे लगभग डबल हुए। मेरे ख्याल से अराउंड 80 से ऊपर हुए, मेरे ख्याल से 82 लेक्चर्स मुझे याद है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने हैंड ऑन ट्रेनिंग करवाया है जितने भी मेजर इक्विपमेंट्स हैं। एंड यू ऑल आर ऑल्सो अवेयर दैट आज की तारीख में इन द फील्ड ऑफ साइंस हम सोशल साइंस की भी बात करेंगे, लेकिन खास तौर से हम लोग साइंसेस की अगर हम बात करें, चाहे बायोलॉजिकल हो या फिजिकल साइंसेस हो, वी ऑल आर रियली आज की तारीख में इक्विपमेंट से ही हम लोग डिपेंड हैं। इट मीन्स टू से दैट वी हैव टू हैव द आइडियाज। इसकी थ्योरी तो हमने काफ़ी पढ़ लिया, इससे यू आर क्वाइट लकी जो हम लोग की टाइम इवन द लाइका का एक माइक्रोस्कोप है हम लोग अर्थ साइंसेस में यूज करते हैं। At a time, sir, it may be around 2 maximum 3 lakhs के होंगे, लेकिन हम लोग को छूने नहीं देते थे। इवन पीजी खत्म होने के बाद भी रिसर्च स्कॉलर्स एज रिसर्च स्कॉलर देखने देते हैं, तो केवल देखने को मिलता है। अगर हमारे पास ये जो 2014 में एक और मेन आदमी है यहाँ पर हमारे बीच रामवीर सर, डॉक्टर रामवीर सर बहुत मेहनत किया है। हमारे प्रोफेसर अविनाश चंद्र पांडे जी जो हमारे पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं, इन लोगों के साथ मिल करके जी साहब जो रह चुके हैं इनके साथ मिल करके बहुत मेहनत किया है इसमें तमाम इक्विपमेंट्स को लाने के लिए। इसके लिए एक जोरदार तालियां। और मैं ये कह रहा हूँ इसमें ऐसे इक्विपमेंट्स है, फॉर एग्जांपल हमारे पास XRD है, GCMS है, ऐसे मशीनें हैं, आप यकीन नहीं करोगे इसके कितना प्राइस हो, बहुत महंगे हैं। और आजकल आप लोगों के हाथ में ही दे रहा है इसको। यू शुड बी हियर एंड फ्रेंडली आप हो जाओ, इसी से काम कर लो, कोई डर की बात नहीं है, कोई एक गाइडेंस आपको मिल ही रहा है। उसके बाद जैसे कि अभी हम आप लोगों के साथ भी करेंगे, जो 2-3 महीने की बाद हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होगा, पहले इंस्ट्रक्शंस होंगे, देन फाइनली आपको उसी इंस्ट्रूमेंट में ही काम करना है, खुद मेहनत करना है। तो आपको भी लगेगा हाँ इसका कुछ
जो हमने जो पार्ट दिया है इसका कुछ फायदा है, इसका कुछ बेनिफिट है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसका बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं चाहूँगा, आप लोग न्यू कमर्स हैं और खुद इसमें आप इंटरेक्ट होंगे, तब आप लोगों की जो असेसमेंट होंगे वो हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ सम ऑफ द फेसेस आई कुड सी, जो पहले की जो बैच का है, फर्स्ट बैच का है, इन लोगों के साथ भी अगर इसमें 1 मिनट का अगर इन लोगों को भी मौका मिले तो कहें तो हम लोगों के लिए ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। थैंक यू सो मच, यू ऑल आर वेलकम। थैंक यू सो मच सर। ये आपकी इस योर एब्सोल्यूट ग्रेटेस्ट कि आप क्रेडिट लेते नहीं बल्कि देने में विश्वास रखते हैं, बल्कि ये आपका डेफिनेटली एक सहयोग है और ऑल टाइम सहयोग है, जिसकी वजह से हम इसमें कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। सर हमने पहला बैच 18 फरवरी को शुरू किया था और लास्ट टाइम एंड पता नहीं ये कोइंसिडेंस है या क्या है, ये नियति है कि वो खींच के फिर से सेकंड बैच भी 18 फरवरी को ही शुरू हो गया। एक्चुअली पहले हम लोग इस बैच को 18 जनवरी को शुरू करने वाले थे, लेकिन बीच में कॉन्वोकेशन आ गए और उसके बाद जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स हैं उनके एग्जाम्स चल रहे हैं। आज भी अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स इसलिए नहीं आ पाए क्योंकि शायद उनके पेपर्स चल रहे हैं, अभी वो फ्री नहीं हो पाए उससे। तो 18 जनवरी को फिर हमारी एमएमसी मीटिंग हो गई एंड देन वी डिसाइडेड कि जो है हम बहुत ज़्यादा पीछे ना जाएं क्योंकि हमको बहुत सारे मॉड्यूल कंप्लीट करने हैं, टाइम पे कंप्लीट करना है, इसलिए हमने फिर 18 फरवरी ही चूज किया। कहीं ना कहीं इस डेट को फिक्स करने के पीछे ये था कि पिछली बार में हम लोगों ने 18 फरवरी शुरू किया था, तो कम से कम अगर उससे पहले नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद होना चाहिए। एक डर और लग रहा था जो मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि पिछली बार हमने शुरू किया, बीच में कोरोना आ गया और उसने जो है वो हमारे 6 महीने के प्रोग्राम को 10 महीने कर दिया। लेकिन फिर ये तो नेगेटिव फेज था। पॉजिटिव फेज उसके हमने देखा कि जहां हमने आपको पहले मॉड्यूल में फर्स्ट बैच को सिर्फ 32-35 लेक्चर डिलीवर करने का टारगेट बनाया था, वहां हम उसको 80 तक करवा पाए। फिर हमने देखा कि जो है वो हमको टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल गया तो हम और बेहतर तरीके से बच्चों को समझा पाए, उनकी चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ पाए। तो ये इसके पॉजिटिव फेज थे। तो हमने सोचा कि हम शायद 18 फरवरी से शुरू करना हमारे लिए शुभ ज़्यादा है, अशुभ उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमको थोड़ा टाइम मिला और बच्चों को ट्रेन करने का, उनको सिखाने का। हमारे पहले बैच में कुल 35 पार्टिसिपेंट्स थे, जैसा हम सभी लोग अवगत हैं, और सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स कैंपस से ही थे और उनमें मोस्टली एमएससी या बी फार्म या एम फार्म स्टूडेंट थे। जैसे कि ये प्रोग्राम है, ये ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करने वाला प्रोग्राम है। ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब है कि जहाँ पर कि हम अपने रिसर्च की बाउंड्रीज को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड करें, डिफरेंट डिसिप्लिन्स को मर्ज करें, जहाँ पर कि सिर्फ साइंस के ही फील्ड के लोग आपस में ना इंटरेक्ट हों, बल्कि जहाँ पर यहाँ पर बैठे हुए लोगों में से साइंस के भी हों, कुछ इकोनॉमिक्स के भी हों, मतलब कुछ आर्ट साइड के भी हों, कुछ कॉमर्स फैकल्टी के भी हों। डिफरेंट फैकल्टीज जितने लोग होंगे उतने उनके अंडरस्टैंडिंग, उनके विचार आपस में मर्ज होंगे, तो शायद किसी प्रॉब्लम का जो है वो इंटीग्रेटेड अप्रोच के तहत कोई हम लोग सोल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इस बैच में, इस सेकंड बैच में फॉर्चुनेटली हमारे पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए, 100+ एप्लीकेशंस रिसीव और थ्रू ऑनलाइन मोड हमने एप्लीकेशंस इनवाइट करी। और हमारे पास इस बार ये ऑप्शन रहा कि हम उन सारे एप्लीकेंट्स में से एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करें। हमने 2 स्टेजेस में उनको स्क्रीन किया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के माध्यम से और प्लस उनका इंटरफेस इंटरेक्शन करके, ताकि हम उनको समझ पाएँ कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं या उनकी इस प्रोग्राम से जुड़ने की क्या वजह है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ जो है वो मतलब इंटेंशनली इससे जुड़ना चाहते हैं या ऐसे, मतलब हम जस्ट वी वांट टू अंडरस्टैंड देम, और हम उनको बताना भी चाह रहे थे कि हम इस प्रोग्राम में क्या करवाएंगे और जो भी हमारी ये कॉम्पिटेंसी है वो उस चीज़ को आप मीट आउट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आउट ऑफ 100 वी सिलेक्टेड टोटल 50 कैंडिडेट्स, और इन 50 कैंडिडेट्स में से लगभग जो है वो हमारे 30 साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं और जो 20 कैंडिडेट्स हैं दे आर फ्रॉम द आर्ट साइड। इसमें इकोनॉमिक्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बार हमारे साथ जुड़े हैं, कॉमर्स मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एग्रीकल्चर के भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो टोटल हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हम देखें
तो हम इस बार से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित नहीं रहे, हमारे साथ डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटीज के लोग भी हमारे साथ जुड़े और इसमें लगभग 12 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो दूसरी यूनिवर्सिटीज के हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बरकत यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2 कैंडिडेट्स हैं, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से हैं, बीपीपीआई कॉलेज के हैं, तो फिर हमारे ही यहाँ के हैं और मतलब हम कॉलेजेस के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस्मानिया हैदराबाद से। हाँ, उस्मानिया। सो जो सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, जिनमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो माइक्रोबायोलॉजी के हैं, एजुकेशन के हैं, फॉरेंसिक साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी इस बार ऐड हुए हैं, लास्ट टाइम नहीं थे, इस बार फूड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट भी अपीयर हुए हैं, बायोकेमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स लास्ट टाइम नहीं था, वो इस बार हमारे साथ जुड़ा है और एमबीए के स्टूडेंट हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी फील्ड के स्टूडेंट हैं, एमएससी के, केमिस्ट्री के हैं, यद्यपि केमिस्ट्री में नहीं होता था डिसर्टेशन, उनका पार्ट नहीं है, बट देवेंद्र ने ज्वाइन आवर प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स एज ए टोल्ड, कुछ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का भी है, फार्मेसी स्टूडेंट हैं, हमारे लाइफ साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं और इस तरह से कई सारे स्ट्रीम्स के स्टूडेंट जिसमें कि सब अलग अलग फैकल्टीज के स्टूडेंट मर्ज होकर के हैं और जैसे मैंने बताया कि एग्जामिनेशन चूंकि अभी चल रहे हैं इस वजह से शायद सारे स्टूडेंट नहीं आ पाए, लेकिन जिनके एग्जामिनेशन हो चुके हैं या पहले मीटिंग में थे वो सब स्टूडेंट यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ स्टूडेंट जो है वो 22 तारीख से ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। सो आई थिंक मैं वन बाय वन सबसे एक बार सबका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। So beginning from you, and I'll request to kindly please tell about yourself, your name, your institute, your course, and the reason, your expectations. Really, what happened कि हम लोग भी टीचर कई बार क्लास में जाकर के ये पूछते हैं, ये बताते हैं आपको, कि हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप डिसिप्लिन रहिए, आप सिंसियर रहिए, आप जो है वो रूटीन में रेगुलरली क्लास में आइए, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन स्टूडेंट की भी अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े कि मैं क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये भी आपसे आप बताएं प्लीज। So my name is Vanita Khare. I am the youngest father from Ushika College side and a doctor Anusika. The reason for joining this program is that I want to learn the basic techniques of instrumentation which will be taught in this program. And I want to gain the knowledge and guidance from the various experts who will come to teach us about research methodology and various instrumentation. Thus I joined this program. Thank you. Thank you. Good afternoon, sir. My name is Neha Makodia and I am in chemistry. जोर से बोलिए माइक में। Sir, I am Neha Makodia and I am a student of MSc Chemistry, and I am here to join the course because I want to learn more about the techniques which are taught in this program. My name is Sukansha and my field is microbiology, Department of Microbiology and University of Bundelkhand University, and my interest is research and techniques. Language is no bar. It is communicating with Good afternoon, sir. Good afternoon to all. My name is Anushka Sharma and I am from Bhopal, Bhagavatam University. I am a biochemistry student from Bhagavatam University. My expectation is that this program will help my doctoral result. Thank you. Just add one more thing, whether you have completed MSc or in last year, last like semester of your MSc. Yes, sir. This is my last semester of MSc. My name is Amita Gupta from MSc Life Science of Inauguration, Jhansi. So I am interested in research and techniques. मतलब कुछ अच्छा सीखने के अच्छा परफॉर्मेंस। Good afternoon, everyone. My name is Vandana Rathur and I am from MSc Life Science, Bundelkhand University, Institute of Biomedical Sciences. And my expectations are, I was eagerly waiting for such kind of program जिसमें मैं research के बारे में learn कर सकूं, and this will definitely help me out. And thank you, sir. Good afternoon, sir.
My name is Jhansi and I have done MAE Master in Applied Economics from Bundelkhand University only. एंड सर मैं आगे पीएचडी परस्यू करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मुझे लगता है पहले बेस होना चाहिए रिसर्च का। तो मुझे ये प्रोग्राम मिला और इसकी वजह से मैं अपने पीएचडी में अभी मैं अगर एक इनिशियल लेवल पे रिसर्च सीखती हूँ तो मेरी पीएचडी में हेल्प करेगा। एंड मुझे लगता है कि जो रिसर्च की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, तो मैं उसको इंक्रीज करना चाहती हूँ। थैंक यू सर। नो सर अभी आई एम टीचिंग असिस्टेंट इन बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट। यस सर, आई एम पास आउट। Good afternoon, sir. Good afternoon, all sirs. I am Sharmila Maurya from Badoi. I am currently pursuing a pharmaceutics final year, Bundelkhand University, Jhansi. My aim is gain knowledge and research work help to this program. Good afternoon, sir. My name is Akansha Mishra and I am a student of MSc Microbiology and I am in my last semester. And I am aiming for that I can learn from this UGC style. I can learn many things and I am expecting that this will help me in my future exams and in my PhD program in future. Good afternoon, sir. My name is Astha Khare. I am from biochemistry department from Bundelkhand University. I joined UGC straight because it provide to me knowledge of research skills, advanced ideas from मतलब कि ये हमें सिखाएगा कि रिसर्च के एडवांस आइडियाज़ क्या हैं और इससे हमें बहुत कुछ फायदा भी होगा। थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Anjali Singh. I am pursuing MSc Life Science from Bundelkhand University. Sir, I am here to learn some basic techniques of instrumentation and do some further research for the welfare of the people. Good afternoon all. My name is Pratibha. I have completed my post-graduation from University of Lahore, and with this program and Which branch you are doing? sir management Monerba. Yes. Sir. Yes. Sir, with this program I am expecting that not only I learn from this program, but with my effort I can also give something to society with learning all the research basics and thank you. You are speaking with down your mask. Okay, sir. Good afternoon, sir. My name is Nisha Pandey. I done my graduation and post-graduation from University of Allahabad from Commerce Department. मेरी उम्मीद इस रिसर्च इस प्रोग्राम से ये है सर कि जैसे कि हम जानते हैं कि हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में थ्योरेटिकल नॉलेज तो बहुत दे दी जाती है, बट प्रैक्टिकली और हमें समझ में नहीं आता कि हमें किस तरह बढ़ना चाहिए। तो जब ये प्रोग्राम के बारे में पता चला तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया, क्योंकि इससे मुझे एक बेस मिलेगा जिसको मैं आगे जब मैं पीएचडी करूँगी तो वो मुझे हेल्प करेगा एक क्वालिटी रिसर्च प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए मेरा एम था कि मैं इस प्रोग्राम को मिस ना करूँ, इसलिए मैं फ्रॉम इलाहाबाद में इस प्रोग्राम को ही करने के लिए आई हूँ। थैंक यू। Good afternoon and respected to all of everyone. My name is Prabhakar from Buddha University and I am pursuing M.Pharma final year students. My introduction from UGC started because first of all that organization UGC and one move is the all instrument provided which we have to improve our expectations like the research and methodology to provide us the lifetime to helping increasing the knowledge and also help to giving the PhD and person to have the knowledge. Good afternoon, sir. Myself Heather Iqbal from Aligarh Muslim University. I qualified MSc Chemistry. I am here to join this strike program. As sir told us that is interdisciplinary or transdisciplinary since research has no boundaries. So in this program we get exposure to advanced research equipments and various research methodology, how to start research. Since in
post-graduation level or graduation level, we only study about theoretical approaches. But since this is a chance we get so that we can experimentally do things and research in this field. Thanks. Thank you so much. Since a few of the previous batch students are also present here, so I would like to ask them to kindly give their feedback, whatever they have felt. Mr. Rohit Vishwakarma, start. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon to Honorable Vice Chancellor of our university. Myself, Jhansi from the Department of Chemistry. I have done my master's in chemistry from the campus. I joined this program in last year, February, and from this program I have learned many things. Like first of all, at the post-graduation level, we kindly don't know what is research, how to proceed a research, what is a phenomena of research, like what are the things we are going to do in PhD, or I think what is the basic idea of research, like from research methodology classes, we have learned many things. Like there are many I can say experts or expertise from various universities taught us about sampling, or I can say hypothesis, or many research ideas like transdisciplinary research ideas that chemistry can be helpful for the pharmacy or chemistry can be helpful for agriculture. So this the idea of transdisciplinary research and the research in like such a Bundelkhand region, like there is no other program which is providing this kind of facilities or this kind of I can say this kind of studies to the research funding. So after the second program of this second module of this program, we have learned about the many high-end equipments which can be helpful for our further studies, like there is XRD, X-ray refractometer, and there is GCMS, and some of the many high-end instruments are also coming, like as Lavko sir said that we are going for IR and other equipment. So this is a platform where we can learn about these high-end equipment. And the third program, we have done our dissertation here, or I can say there is no dissertation in our campus in the master program of chemistry. So we did our dissertation under the UGC stride cape. So we did research on our multi-bond carbon nanotube functionalization, and this is a very good experience for my further research, and we are going for a paper, and the publication we have under this stride program, which will really boost our curriculum vitae. So this is a great opportunity, and also conference has given me best efforts to the project your paper or research. Thank you for the stride effort. Next, please. Good afternoon, sir. My name is Pallavi and I completed my master's in chemistry from university campus. And during this program, I learned a lot of things, and I also know about the challenges are coming in my life during the PhD. And I also want to thank Lavko sir, Singh sir for supporting us, all the faculty of innovation, all the instrument handling. So thank you so much. My name is Radha Eva, and I'm in Zoology, Department of Zoology. It was a great experience actually. So I learned so many things about research, about papers, about everything, and we are great experience for the teacher, for the assistant, for the professors और जितने भी हम लोग के प्रोफेसर्स हैं जो हम लोगों के साथ मतलब हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है बट स्ट्राइड के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत एक्चुअली सीरियसली बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मशीन को लेके इनोवेशन, फर्स्ट टाइम इनोवेशन सेंटर विजिटिंग और लवको सर, एमएम सर और हम लोग के जो सुपरवाइजर हैं उनके सपोर्ट से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया और इट वॉज रियली ग्रेट। थैंक यू। Yes, Mr. Anil, you want to say? Yeah. Good afternoon, sir. My name is Sven Marpal, MSc Agriculture, Science and Medical Chemistry, Bundelkhand University, Jhansi. Completed. सर मैंने यहाँ पे सर स्टार्ट में आके सर मैंने रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में होता है जैसे थीसिस, तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। मैंने सर के पास आके सर से मैंने सलाह ली, सर के साथ मैंने बहुत कुछ जो मैंने इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में नहीं सीखा वो सर यहाँ पे आके
सीखा, फीडर भी जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। Thank you so much. Good afternoon, sir. My name is Jhansi. I am qualified MSc Biotechnology. सर UGC स्ट्राइक के अंदर मेरा प्रोजेक्ट था जो कि एप्लीकेशन के अंदर में हुआ, और सर इसके अंदर हम लोगों ने रिसर्च के बारे में सीखा और बहुत सारी चीज़ें सीखी। Zoology, Department of Zoology. Sir, it was a great experience actually. So I learned so many things about research, about papers, about everything, and we are great experience for the teacher, for the assistant, for the professors और जितने भी हम लोग के प्रोफेसर्स हैं जो हम लोगों के साथ मतलब हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है बट स्ट्राइक के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत एक्चुअली सीरियसली बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं मशीन को लेके। इनोवेशन फर्स्ट टाइम इनोवेशन सेंटर विजिटिंग और लवको सर, एमएम सर और हम लोग के जो सुपरवाइजर हैं उनके सपोर्ट से हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत कुछ बहुत बढ़िया और इट वॉज रियली 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 ग्रेट। थैंक यू। Yes, Mr. Anil, you want to say? Yeah. Good afternoon, sir. My name is Sudhir Marpal, MSc Agriculture, Science and Medical Chemistry, Budelkhandt University, Jhansi. Completed. सर मैंने यहाँ पे सर स्टार्ट में आके सर मैंने रिसर्च हमारे डिपार्टमेंट में होता है ऐसे थीसिस, तो मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया। मैंने सर के पास आके सर से मैंने सलाह ली, सर के साथ मैंने बहुत कुछ सर जो मैंने इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट में नहीं सीखा वो सर यहाँ पे आके सीखा, फीडर भी जो काम किया उसके लिए धन्यवाद। Thank you so much. Good afternoon, sir. My name is Jhansi. I am qualified MSc Biotechnology. सर UGC स्ट्राइक के अंदर मेरा प्रोजेक्ट था जो कि एप्लीकेशन के अंदर में हुआ, और सर इसके अंदर हम लोगों ने रिसर्च के बारे में सीखा। शुरुआत जैसे मैंने शुरुआत में कहा था एक टीम एफर्ट है और जिसकी वजह से हम लोग सक्सेसफुली अपना मॉड्यूल 1 बैच कंप्लीट कर पाए और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हमने टीचर्स के लिए भी इसमें फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराया और जिसमें कि रिसर्च एंड पब्लिकेशन इथिक्स, साइंटिफिक कंडक्ट एंड साइंटिफिक मिसकंडक्ट, हमारे यूजीसी की क्या प्रेजेंस पॉलिसी है, कॉपीराइट क्या होता है, पेटेंटिंग प्रोसेस क्या होता है, इस सब पे भी हमने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम कराया जिसमें माननीय कुलपति जी के निर्देशानुसार 50 सीटें ही हमने रिजर्व करी थी और उसमें भी कई सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लोग उसमें पार्टिसिपेट किए। उनमें हमारे बीच वो लोग भी हैं जो उसके मेंबर थे, आई मीन जो पार्टिसिपेटेड, राहुल शुक्ला जी, एंड वो भी हैं रामवीर सर who even delivered the lecture in that MTP. So I'll request and in fact JP Yadav sir is here and he delivered lecture in module 2 I suppose in first batch. So I'll request them to kindly share his feedback at module 1 please. Good afternoon, sir. Honorable Vice Chancellor, sir. Professor M.M. Singh, sir. Dr. Lakbir Dwivedi, sir. Ramveer, sir. Dr. J.P. Yadav, sir. Mukul Pastorji. I would like to share my experience about strike project. It is a wonderful experience, and I have also participated in a faculty development program, which was really very good, and many things I have learned from faculty development program as I am also pursuing my PhD degree also. So it was very helpful at that time when I am attending my PhD also and parallelly I am doing FDP, because there are many questions, many queries about the research methodology, about the patenting factor, about how to write the research paper. It is very important because if you are doing a research work, you have to be analytical about how to write your thesis along with your research paper. It is very important. Parallelly, you have to do your research paper priority. You have to write your thesis also, and moreover, you have to perform your experimentation.
So I would like to thank Dr. Lakshmi sir for giving me opportunity for being a participant in FDP program, and I would like to also very thankful to Honorable Vice Chancellor sir who have given such a wonderful program in Bundelkhand University, a nice platform for faculty as well as students, because this is the first program in whole Uttar Pradesh, and this is the first university, state university, which is running strike program. This is a great opportunity for you, all the students of master degree, because when we are doing our masters, it is there is no facilities like strike program, but you all are very lucky that the strike program is going on in Bundelkhand University, and many research policy as well as academic policies are being appreciably improved day by day in Bundelkhand University in the leadership of our Honorable Vice Chancellor. So I am highly thankful to seniors and Honorable Vice Chancellor sir, Professor Anand Singh sir, Lakush sir, and for guidance in day-to-day life, for also to Dr. J.P. Yadav sir. Thank you so much. Share that very few people were there in the participants who received A grade in FDP, and Dr. Rahul Shukla ji is one of them. So I think only 2 or 3 were there. Now I request Dr. J.P. Yadav sir to kindly share his experience. Good evening, everybody. Honorable Vice Chancellor sir, Professor Anand Singh sir, Dr. Lakush, and other colleagues and students. It was a great experience for me also, and we were so excited because as many of us told that this is the first program in the UP that only Bundelkhand University was launching. This is strike program. So each of us was excited to be associated with this program. I was also, there were 5 students under my guidance, and all of them completed their project. But unfortunately, because of several other regions and their own, only one is present here, sir, and they have completed, so they are going to their home. This time, unfortunately, no student from biology department is associated with this strike second batch. But as I played my role in the first phase, in second phase, if opportunity is given, I will give the lectures and I would like to be associated with the students. So thank you, and I congratulate all the students who have completed their project, and welcome to those who are coming for the second project. Thank you. मैं सर यहाँ पर जरूर एक चीज शेयर करना चाहूँगा कि जब मॉड्यूल 3 के अंतर्गत हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट दिए थे बच्चों को, उनमें उनका प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन रिव्यू करने के लिए तो 3 बार हमने प्रोग्रेस प्रेजेंटेशन कराया बच्चों के, और उस दौरान आपके निर्देशानुसार हमने सारे जो गाइड्स थे उनको भी इनवाइट किया था कि प्लीज आप भी आइए, ताकि बच्चों को भी एक संबल मिलेगा और काम क्या चल रहा है वो कागज हो पाएगा. डॉक्टर J.P. Yadav sir was one of the guides जो हर प्रेजेंटेशन में आए, पूरा समय दिया in spite of his busy schedule, and I think वो 5 स्टूडेंट थे इनके, तो मुझे लगता है 2-2.5 घंटे तो कम से कम लग जाते होंगे, and he gave every time, he gave his full time, and that shows the scientific approach and seriousness for the scientific process. So please have a round of applause. And definitely would like to, keep on adding, and every time we will be having the module 1 or module 2, and we will request you, we will invite you to deliver the lecture, because your kind support and the support of you all, if it have not been completed or it will not be completed further also. Please, now I will request Dr. Mukul Pastorji kindly share his experience, because he also given training on the XRD. Dr. Lakupuri sir, Ramdev sir, Jhansi, Dr. J.P. Yadav sir, Shankar ji, and they are all students. So actually, it is not important how I have felt. Actually, this is important that last batch student how they felt from our side. Actually, our success only depend upon your experience and your feedback. So if you are satisfied, then it's okay. Otherwise, I have to work hard for second batch and third batch.
and I will would like to know their feedback, and I will try to learn for the process. And thank you very much. Thank you. As Jhansi sir told that the center was established with the kind effort of Dr. Ramveer sir. He has been the founder coordinator of the center, and किसी चीज को बनाने में उसको खड़ा करने में कितनी मेहनत लगती है वो जब आप बनाएंगे तब समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं अब इस मौके पर चूंकि सर हमारे साथ उपस्थित हैं तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें प्लीज। Good afternoon everyone, Honorable VC sir, MLC sir and my fellow colleagues. अभी लक्कू जी ने कुछ कहा, हालांकि कुछ नहीं, मैं वी वर्क फॉर इंस्टीट्यूशन, so it is for the institution. So like अगर हमने ये सेंटर बनाने में कुछ भी कंट्रीब्यूट किया तो it is for you and for us, because मैं ये फील करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज आर नॉन फॉर डायनेमिज्म। अगर यूनिवर्सिटीज में डायनेमिज्म नहीं है तो आई थिंक कुछ भी नहीं है, और स्टूडेंट्स उस डायनेमिज्म का सबसे बड़ा कैटालिटिक फोर्स है। बिकॉज वी मे बी हियर फॉर few long years, but I think you are here for a short time and you come, you agitate everything and then you go out. And I believe when you are shaking the system keep on improving and refining itself. और टीचर्स के लिए भी मैं कई बार, क्योंकि मुझे लगभग 18 साल की सर्विस होगी एंड आई थिंक लगभग 7-8 PhD करवा चुके हैं, बट मैं फील करता हूँ कि हर आने वाला स्टूडेंट हमको भी कुछ कई सारी चीज़ें दे के जाता है। और शायद इस प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा मेरिट है वो ये है कि हम आपको वो चीज़ें देने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है तो शायद हमारी डिलीवरी भी अच्छी नहीं होगी। तो आपको सिखाना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन साथ में इस चीज़ को यहाँ से सीख के जाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और आउटपुट देना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि टीचर जो है वो आपको मोटिवेट कर सकता है, सिखा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना कहीं लाइफ में। अगर आपने सपोज करिए कि यहाँ से 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर आप कुछ लाइफ में अच्छा कर पाते हैं तो वी बिलीव आवर एफर्ट इज जस्टिफाइड। अदरवाइज कहीं हमको लगेगा कि हमने आपको टीच किया, आपने शायद अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो शायद हमने उस पर अपना टाइम और अपना रिसोर्स वेस्ट किया। सो you Dr. Lavkush has asked about your expectations, but yes, our expectations are also there, and it is that whatever you learn in this 4 months training, so you try to develop it in some career, and definitely it will help, because we are doing hard work. Dr. Lavkush, Dr. Anand Singh sir, we are all doing hard work, that you should get a very good capsule course, you should learn maximum so that you can deliver at later stage of your life. And as I said ना कि जैसे टीचर्स दे हैव टू मोटिवेट, हमें बड़ी खुशी है कि हमारे बीच में वीसी सर हैं। इज द लाइक ए बिगेस्ट मोटिवेटर। यू विल फाइंड हिम इन ऑफिस फ्रॉम यू विल फाइंड इन क्लास 10 to 11, then you will find him in office from 11 to 7, and in between whenever there is any chance of interaction with the student or the teacher, he always spares time. He is very kind enough. And you see, we are learning a lot from him, that how to schedule your day in such a way that in the end you find that everything is complete for the day. So it is a great learning under his guidance, and we are lucky enough that sir is here and he is always there. I tell you, whenever we'll find that some kind of boost is required, input is required, impetus is required, so we always request sir, and he always is always there to bless us. So what we have to do, that in this program we have to try that you have to learn the maximum and you have to utilize whatever you learn here. We have tried our best to put up the best facility, because जो फैसिलिटी आप देख रहे हो, आपने अपनी यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट बाहर से, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी इलाहाबाद से हुआ, तो आपने देखा होगा कि वो यूनिवर्सिटीज 100 साल, 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं। फिर भी हमारी यूनिवर्सिटी रिलेटिवली न्यू है, बट हमने एफर्ट किया। जैसे आप AMU से हो, आपने देखा होगा कि AMU इज ए जाइंट, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंडिंग इज देयर, बट
हमारी यूनिवर्सिटी रिलेटिवली यंग भी है, लेस फंडेड भी है, बट हम लोन बिल्कुल नहीं है। वी हैव ट्राइड कि जितना भी रिसोर्सेज हमारे पास है अवेलेबल उसको बेस्ट यूटिलाइज करें, स्टूडेंट को बेस्ट ट्रेन करें और अपना भी बेस्ट देने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जो फैसिलिटी है उसको यूज करके हम लोगों ने भी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट क्लिक किए हैं। उससे फायदा ये हुआ है कि जो लोग पहले बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को जानते भी नहीं थे वो जानते हैं ये बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी इज देयर। एंड जैसा भी डॉक्टर लवकुश ने बताया कि पिछले स्ट्राइड के प्रोग्राम में हर स्टूडेंट ने पेपर भी पब्लिश करने की कोशिश की। इट्स ए वेरी गुड थिंग, बिकॉज अगर आप 40 स्टूडेंट हैं 50% भी अगर कुछ पब्लिश कर पाते हैं तो यू आर गेटिंग क्रेडिट, टीचर इज गेटिंग क्रेडिट, यूनिवर्सिटी इज गेटिंग क्रेडिट। सो आई विश कि सब स्टूडेंट उसी डायरेक्शन में सोचेंगे एंड यस वी आर देयर टू गाइड यू एंड we'll be interacting because I think I'll be having some lecture in module 1 also 2 also, so we'll be interacting. So thank you for joining the program and I wish you all the best for this. Thank you so much sir. जैसा कि सर ने कहा एक दो बहुत ही चीज जो मैं फील करता हूँ कि हम कई बार ये चाहते हैं कि लोग हमें सुनें, we want to be understand, but अंडरस्टैंडिंग हम भी उन चीज़ों को समझें, ये भी उतना ही जरूरी है। When we want, we expect from others to understand us, we also be understanding. So we are lucky that we are having members in our team who are understanding you, and they are also having understanding for you also, right? वो आपको भी समझेंगे, आप उनको समझिए, आपस में एक बेहतर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के साथ हम लोग एक रिसर्च के बारे में थोड़ा जानेंगे, सीखेंगे। हमारे साथ मैडम अनु सिंगला जी भी उपलब्ध हैं। मैडम भी जैसा कि मैंने डॉक्टर JP सर के बारे में कहा, मैम भी 5 स्टूडेंट रहे फर्स्ट बैच में फॉरेंसिक साइंस से और काफी सारा सहयोग मैम कर रहा है एंड शी वाज आल्सो प्रेजेंट इन एवरी टाइम व्हेन देयर वाज अ प्रोग्राम। प्लीज कैन यू हैव अ राउंड ऑफ एंड जो साइंटिफिक अप्रोच आप लोगों ने दिखाया है उसकी वजह से हमको ये संबंध मिला कि इस बार हम जो मॉड्यूल 3 में प्रोजेक्ट्स देने वाले हैं आपको, उसके पहले हमें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है जहाँ पर कि हम स्टूडेंट्स और जो हमारे मॉड्यूल 3 में जो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं, क्योंकि हमने इस बार से ओपन एंट्री इनवाइट करी है मॉड्यूल 3 के लिए, गाइडेंस के लिए हमने इनवाइट किया है टीचर्स, गाइड्स के लिए हमने एंट्री इनवाइट करी है। उसमें हमारे पास लगभग 25 गाइड्स रजिस्टर्ड हुए कैंपस से और उनका स्पेशलाइजेशन पूछा है और अभी आज से इसको शुरू कर रहे हैं। इसके बाद हम अभी फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में लगभग हम एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे जिसमें सारे जो फैकल्टी मेंबर जो रजिस्टर हुए हैं गाइड बनने के लिए उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे और बच्चों की क्या एक्सपेक्टेशन है या वो क्या करना चाहते हैं और टीचर्स का क्या स्पेशलाइजेशन है और लैब की क्या कैपेसिटीज हैं, स्ट्रेंथ क्या है, उसके आधार पर हम कोशिश करेंगे कि टाइटल डिसाइड हो और वो टाइटल्स हो, प्रोजेक्ट टाइटल्स हो जिनका भी सोशल रिलेवेंस हो। तो शायद अब तक ऐसा होता आया हो कि हम कई बार अपने आइडियाज आप पे थोपते हैं, आपके चीज़ों को जानना नहीं चाहते, ये समझने का समर्थ नहीं होता। एक बार एक म्यूचुअल कंसेंट से चीज़ें डिसाइड हो, आपका इंटरेस्ट भी उतना ही वेटेज रखे तो शायद एक बेहतर आउटकम निकल करके आएगा। तो आपके पास गाइड्स चूज करने का ऑप्शन हो सकता है, आपके पास गाइड्स होंगे, उनका स्पेशलाइजेशन आपको पता होगा, आपका इंटरेस्ट आपको पता है, उनके आधार पर आप गाइड्स चूज कर सकते हैं और शायद ये प्रोसेस हमें बेहतर आउटकम दे पाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सो मैं अनुरोध करूँगा मैडम अनु सिंगला मैम से, प्लीज शेयर एक्सपीरियंस अबाउट द प्रोग्राम प्लीज। Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Ram Singh Sir, and my dear faculty members, dear students, मेरा इस प्रोजेक्ट को लेकर के 1-2 पॉइंट्स हैं जो मुझे बहुत पॉजिटिव लगते हैं। आफ्टर 20 years ऑफ माय जॉब मुझे ये महसूस हुआ जब ये प्रोजेक्ट आया कि हमारा इंटर फैकल्टी जो हमारा आपस में टीचर्स का जो कोऑर्डिनेशन है सर, ये कहीं ना कहीं बहुत लैक था। मतलब हम लोग सब साइंस के टीचर्स हैं लेकिन अपने अपने डिपार्टमेंट में अपने अपने चीज़ों में थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के तहत मतलब अगर मेरे किसी स्टूडेंट को किसी और टीचर के गाइडेंस की ज़रूरत है तो यहाँ पर हमें वो बहुत फ्रीली हमें मिला। प्लस जो इनोवेशन सेंटर की वजह से, क्योंकि UGC स्ट्राइड है, जो प्रोजेक्ट इनोवेशन सेंटर में रहा, यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं
वो हम लोगों ने बहुत फ्रीली यूज़ किया। लाइक मुझे अगर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता है और सर को वो बहुत अच्छे से आता है, तो इन्होंने मेरे स्टूडेंट्स को गाइड किया। तो उस वजह से थोड़ा सा रिसर्च में, थोड़ा सा नहीं सर, काफ़ी ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, जो कि हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे थे। इनोवेशन सेंटर बनने से पहले हम बहुत लैग कर रहे थे, क्योंकि सबके पास, किसी के पास कोई फैसिलिटी है, किसी के पास कोई फैसिलिटी है। लेकिन सर हमारे पेपर्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ यूज़ करके हम अच्छा पेपर नहीं बना पा रहे थे। और हमें सर उतना नॉलेज भी नहीं था, बहुत कम एज में हम सब लोग यहाँ पर आ गए यहाँ पर। तो हम लोगों ने उतनी अच्छी चीज़ें शायद जो भी सीखा सर यहीं पे सीखा। एज ए टीचर भी हमने जो ग्रोथ किया वो हमने यहीं पर किया। तो हमने टीचर ना होकर के स्टूडेंट के जैसे बिहेव किया है सर यहाँ पर, हमने भी बहुत कुछ सीखा है। और जो चीज़ में लैग करते थे, मुझे तो यही लगता है कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम आपस में बहुत जुड़े हैं। थैंक यू मैम। जैसा कि हमने कहा, ये पूरा प्रोजेक्ट ही टीम वर्क पे है। और इस पूरे 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान अगर कोर कमेटी से लेकर के एक्सपर्ट्स तक शुरुआत करें, तो अभी मॉड्यूल 1 में जो टोटल एक्सपर्ट्स हम लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं इंटरनल और एक्सटर्नल मिला करके, वो लगभग 22 एक्सपर्ट्स इंटरनल हैं और लगभग 18 जो एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सटर्नल। तो आप मान चलिए कि लगभग 40 एक्सपर्ट्स हम लोग इन्वॉल्व करने वाले हैं सिर्फ मॉड्यूल 1 में। एंड वी हैव प्लान्ड योर मॉड्यूल 1 अप टू 15th अप्रैल, और उस 15 अप्रैल तक के रिसर्च मेथोडोलॉजी टीचिंग में कुल 80 लेक्चर कराने का प्लान इस मॉड्यूल में भी है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमने बैच 1 को डिलीवर किया है उससे कम आपको डिलीवर ना करें, टाइम मैनेज करें। पिछली बार हमारे साथ थोड़ा सा 1 महीने का गैप, इनफैक्ट 1 महीने से कम का ही गैप, जबकि लॉकडाउन था, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा लॉकडाउन को कुछ समझे नहीं हमने, और हम लोग चलते रहे, ऑनलाइन चले, ज़्यादा रुके नहीं। लेकिन वो गैप इस बार नहीं होगा, तो फिर भी हम आपको 80 लेक्चर कम से कम कराएंगे। तो अगर सारे मॉड्यूल्स मिला दिए जाएं तो पूरे 6 महीने के ट्रेनिंग के दौरान मुझे लगता है कम से कम 70 से 80 लोगों के साथ आपको इंटरेक्शन होगा। आप अगर मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 मिला दीजिए तो 70-75 एक्सपर्ट्स के साथ आपका इंटरेक्शन होने वाला है। सो आप कई सारे बेहतर एक्सपर्टीज गेनिंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले। अब आपके ऊपर है कि आप उसमें से कितना ग्रैब कर सकते हैं, कितना आप इसे अचीव कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने इंटरफेस मीटिंग में आपको बताया था, इस प्रोग्राम की सबसे पहले नीड ये है कि आपका सीरियस होना इसके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी गंभीरता इसमें नहीं लाएंगे, रेगुलर नहीं रहेंगे, सिंसियर नहीं रहेंगे, तो शायद आप वो ग्रैब नहीं कर पाएंगे जो हम आपको शायद, अगर आप रेगुलर होते रहेंगे तो दे पाएंगे। तो इसलिए आपको आज से कमिटमेंट लेना है कि अब तक जो जहाँ जैसा रहा हो, आप रेगुलर वहाँ रहे होंगे, ऑब्वियसली सिंसियर रहे होंगे। आप अगर वहाँ रहे हैं तो उस चीज़ को कंटिन्यू करना है, और अगर नहीं रहे हैं तो आप हो जाएंगे, तभी आपको बेहतर कुछ यहाँ पर मिल पाएगा। तो मैं अब हम लोग शुक्रगुजार हैं पुनः हमारे माननीय कुलपति जी का। इस प्रोग्राम को शुरू करने पर शुरुआती दिन में सर से हमने रिक्वेस्ट किया कि सर का एक लेक्चर भी हो जाए न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, और इट हैपेंड एवरी टाइम। सर ने हमने सर को खूब परेशान किया इस प्रोग्राम के दौरान, इन द ऑफिस, इन हिज रेजिडेंस, ऑन फोन, एवरी टाइम, करते रहेंगे सर, वी आर सॉरी फॉर दैट। और हर बार जब सर से हमने रिक्वेस्ट किया, सर हैज गिवन हिज फुल टाइम, ही इज डिलीवर्ड लेक्चर ऑन अ वेरी न्यू काइंड ऑफ टॉपिक दैट थ्योरी ऑफ नॉलेज, जो सुनने के बाद पता चला कि नॉलेज के कितने टाइप्स होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोगों को अभी तक पता नहीं थी, वो सर को सुनने के बाद हमें पता चला, और नॉलेज को एक नई एंगल से देखने का एक अनुभव मिला है। उसके बाद एफडीपी के दौरान जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम था, सर से हमने फिर रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज एक लेक्चर सर आपका हो जाएगा तो हम लोग धन्य हो जाएंगे। सर ने उस दौरान एक लेक्चर दिया एंड्रोलॉजी एंड पेडागोजी। हम लोग तो सिर्फ पेडागोजी प्रैक्टिस से समझते थे, उतना ही जानते थे, थोड़ा बड़ा नाम इंटरनेट पे आना पड़ गया था, लेकिन एग्जैक्टली एंड्रोलॉजी और पेडागोजी होता क्या है और दोनों की कितनी आवश्यकता है जब आप स्टूडेंट लाइफ में हो या टीचर्स लाइफ में हो, ये हमको समझ में आया।
पुनः आज जब दोबारा दूसरा बैच शुरू हो रहा है और अगर वो बैच की शुरुआत सर के लेक्चर से हो तो इससे बेहतर कुछ नहीं। सो मैं फिर से सर का हम सभी जितने भी हमारे टीम मेंबर्स हैं सबकी तरफ से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि सर ने हमारे इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया इस चीज़ के लिए के बावजूद भी। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स बताए जाते हैं, बट एग्जैक्टली वो है क्या, हमको किस तरह से अपने हमारे साथ यहाँ टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स तो है ही हैं कि किस तरह से हमको उसको करना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, क्या नया चेंजेस हैं, वो सब कुछ हम आज थोड़ा सा विस्तार से सर के साथ जान पाएंगे। इससे पहले मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सर के अब तक के मार्गदर्शन के लिए और आने वाले समय मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपने आशीर्वचन से हमें निवेदन करें प्लीज सर। Good afternoon, everybody. Dean Science and Finance Officer, Professor M.M. Singh, Dr. Lakush Dwivedi, all the faculty members who are present here, who are very actively involved in the whole process of the strike program, all the new participants as well as the old participants. It is indeed a pleasure to be here with all of you. Interacting with young minds has always been a very matter of interest to me, rather a passion for me. If you do not interact with young minds, your mind does not remain fresh always. And one reason I may tell, when I was student at Lucknow University, one of my teachers used to say, the biggest advantage of being a teacher is that you are always with young people. In all your jobs, as your job profile improves, you go to a higher level, you are always meeting aged people. You are in the contact of aged people. But in education, we are always in the contact and interacting with the young minds. And that keeps you fresh. That keeps you inquisitive. That keeps you knowing what the new generation is wanting, what is their thought process, what are their priorities. So that is very important for all of us. And I think for many of the teachers who are sitting here, all of them are very good faculty. They have always been interacting with the students. They are always keeping an interest in the performance of students and how to improve upon that. That is a very positive part of this university. As Dr. Lakush told, that in terms of resources, we are lacking in many things as compared to the many central universities. But in terms of passion, in terms of willingness to improve upon, I think it is not behind any other university. That is a very essential part. And that is why in the whole of the North India, they are saying in UP, in whole of the North India, only 2 universities got this strike, UGC strike program. One is Inauguration University and one was Rohtak University. Whole of the North India. And in the preparation of the plan, both Professor M.M. Singh and Dr. Lakush, he prepared everything. They made a presentation before the UGC committee and they finally approved this program. And last year we started this program, as Dr. Lakush told you, that because of the COVID-19, there were disruptions. But I may tell you, in the country, unlock started in June, July, August. But here the unlock started within 1 week. In April beginning, they started this unlock. So we already had several phases of unlock. By March end when they started, and by the end of March,
Here, the teachers, Dr. Ramveer, JP Yadav, they all started the online classes. They were one of the first to start online classes in the higher education. I think this was one. So that thing is continuing. About the STRIDE program, they will tell you in detail. But the whole objective of STRIDE program has been that people of different disciplines should come out of their shells and interact with each other. Because whenever a new branch, a new knowledge, I may deliver a lecture on knowledge also. Whenever a new knowledge emerges, it is very difficult to put it in any frame. For example, the microbiology or the biotechnology, when it came into being, people did not know whether to put it into zoology or botany or chemistry. So a new branch in the name of biotechnology developed. Similarly, microbiology, in forensic science. So the knowledge has been growing, and not in terms of the intensity or the depth, but in terms of width also. And that is why new and new branches are emerging. Sometimes the new branches become more powerful than their old parent branches. And that is the beauty of it, the knowledge growth. But still we are divided into silos. We say that we are in zoology or in botany or biochemistry, like that. But it is very essential that the knowledge gained in one branch of knowledge is also equally useful to the students and teachers of other branches of knowledge, as they have already narrated. And this cannot be told in any formal education. For example, in the forensic science, they have different syllabus, different papers, and all belonging to their branch. In microbiology, they have all papers, syllabus belonging to microbiology only. In economics, all they have related to their branches. So formal education is good, but it has certain limitations. You study within a given time frame, within a given structure, within a given paper. Most of the time you are meeting the deadlines for completing your syllabus, preparing for exam. Teachers are preparing for their question papers, evaluation, so many things. So a formal education is good, but it has certain limitations also. And that is why this sort of a program, where we can have people from different disciplines, all interacting with each other and interacting with the specialist faculties who are there, who are available. So that broadens the scope of knowledge, that also fills the knowledge gaps. Because within one branch of knowledge and another branch of knowledge, there may always be some gap. And I think microbiology, biomedical sciences, they all developed because to fill up those gaps, knowledge gaps. Because one branch of knowledge said that this is not within our branch. Another thought that this is not in our branch. So, how to fill up the gaps so that the new branches emerge? Knowledge has application everywhere. It is not that it is application only one branch. In the real world, in the real industry, they do not want a person in physics only is needed. They will give you a problem, give you an issue. And then they will say, if you want a solution, irrespective of the fact whether this branch of knowledge, a specialist of this branch of knowledge or another branch of knowledge is required. Recently, the DRM Jhansi was here. He says that we have a number of branches, a number of specialists, right from physics to chemistry to mechanical engineering, all branches. So it is not really that we only need mechanical engineers, all types of engineers. For example, when signaling is required, automatic signaling, they need people from information technology.
So the transdisciplinary means that you should come out of your specialized branch, try to bridge the gap between two branches of knowledge, and are able to go to the other branch if the situation so requires. And that is why the focus of UGC and the government has also always been on that instead of developing specialists of particular branches, which may not be applicable in certain situations or knowledge for the sake of knowledge, but as a developing economy, we need knowledge for the sake of application also. Although there is always a debate about that, whether the applied research is good or pure research is good, both have their own value. I am not denigrating anyone. But we need applied research for the development purpose, for a developing economy. And that is why this STRIDE program was conceived. It has been implemented at many places, including this place. Coming to the research part, I think I will not be able to do with that. The education policy, that I will discuss some other time is required. What is required for research? The most important thing is your mental frame of mind. And the most important, I have been saying, an inquisitive mind is the first requirement of research. All research that happened in the past happened because people saw something and they thought why it is happening. If Newton did not have an inquisitive mind, why this apple is falling on the ground and why it is not going upward in the sky, if this question had not come to him, probably whatever researches that he did were not possible. So for all of you, I will say, the most important mental tool, apart from all the equipment that are needed, your mind should be ready, and mind should be ready because you should have an inquisitive mind. Whenever you see or read something or see an equipment, some questions should come to you. And these questions are the biggest source of undertaking research in a particular field. So inquisitive mind is the most important thing that is there. Apart from that, the second part, I will say, a good knowledge of the subject that you are yourself studying. Without a good base, you will not be able to go further. A base level research is not what is required, because India, and for that matter any part of the world, have come above that base level. This generation has enough base level knowledge. It is not in the 19th century or the early part of the 20th century when very basic things were being researched. A base level research is available in almost all branches. I will not say all branches because knowledge is something that you cannot predict what will be the knowledge. So very good understanding of your subject. So all of you are from different branches. You will be interacting with people of different branches, but you will be able to interact properly or beneficially if your base level of knowledge is very good. Only then you will be able to understand what the other person is saying, and that person will also be able to understand what you are wanting to say. Because at higher level, as the knowledge becomes more distinct, but there are common threads are also found. Common threads in all the branches. So for that purpose, as I said, that good knowledge of your branch that you are presently studying, that is very essential. And only then on a sound footing of your knowledge, existing knowledge, you can develop further. The third requirement, especially in sciences, because in the present era of sciences,
a very expensive, sophisticated equipment are required. For this purpose, in many universities, I will say most of the universities, except some very resourceful universities, the equipment that are needed, because on the one hand they are expensive, on the other hand their maintenance is more expensive. And in many large number of universities, we know the expensive equipment was purchased, but within 1 year or 2 years, the equipment was not workable. No maintenance was done. Fortunately, we have been able to ensure here that whatever equipment we have, they are all in working order, isn't it? Look, all equipment that we have, they are in working order. We may not be having many expensive equipment, but whatever required are here, adequately here, and they are all in the working order. So all of you will have a hands-on opportunity to work on those equipment, as Dr. M. Singh or Lokesh, everybody said that at the time when they were students, many of the equipment they were not able to even touch, and they used to see them only in books. But here you will have a personal knowledge, personal experience to work on those equipment. Now, how to use them, that is one part. For what purpose it is to be used, that is another part. Both are important. For unnecessary use of any equipment does not give anything. This time, because it was for transdisciplinary, in the first batch, we had taken students only from the sciences, both pure and applied sciences. But this time, we said that we are talking of transdisciplinary researchers, so we should have transdisciplinary students. That is why students from social sciences were also invited, and I am happy that few of them are there. The tools of the social sciences are different. All the mental tools are there. The inquisitiveness, the ability to see through certain aspects, data analysis, all these things are common in both of them. We were in a fix how to keep the interest of science students in the lectures for the social sciences and vice versa. That was a big challenge. But we thought, let us try this time and ensure that there is adequate representation for social science students also. They will also learn how the other science students are working, and the science students will also understand how the social sciences, what are the mechanisms. Because the common term is science, social sciences and pure sciences, or physical sciences or biological sciences. So the common term is science. And science means what? Understanding or analyzing the cause-effect relationship. This is the basic thing about the science. So this is the challenge that we have seen, and I hope the social science students will not feel that they are not gaining adequately. In any such course, the first requirement that we thought that it is not a formal education, it is not giving any degree as such. You are already going through a course for getting a degree. The first requirement that we thought that anybody who joins, maybe 20 who join, but they should be dedicated for that. And that is why we fixed a certain fee. And that certain fee that is fixed is returned to you, not in terms of money, but in terms of facilities that will be provided to you freely. And the objective of keeping a fee was that only those who are really interested, they should join this course, and maybe 20 or 30 join, but they should be really dedicated. So that is one part. Another that you will learn from the experts, that learning will be quite valuable, and different topics that are there, which probably you will describe tomorrow, that will be delivered. But one very important part of learning is not the learning from the professors,
learning from the books or learning from the equipment. That is peer learning. You should learn from each other. As Madam said, the teachers are having some peer learning. And she's very clearly said they are having peer learning. What in biomedical they are doing, whether that is applicable in their forensic science or not. What they are doing, whether it is in the zoology they are learning or not. So the peer learning is a very essential part of the whole learning process. Gone are the days probably when the rishis, munis used to go in Himalayas, remain in solitude and learn a lot. That is probably in the philosophical sense that may be okay. But even when they used to go to Himalayas and spend time in solitude, they used to go with a lot of experience. And the thought process was going on there. But the experience, rich experience, is a very essential requirement of any research. Because any experience, you cannot observe things. Lot of things you will learn through observations. So peer learning, and that way I think it is very good that students of all branches, agriculture, forensic science, I think zoology, botany, physics, right, microbiology, biomedical, I think agriculture also are there. Yes, agriculture are also there. So almost all the branches are there, and that I am very sure that at the end of the course, the peer learning is going to be the biggest bonus that you may get. So keep that also in mind. About the seriousness of this, Dr. Lavkush is a very gentle person, but he is a very tough teacher. And even to the teachers, he did not give good grades to all of them. Only he said 3, 4 or got A grade. Two only got A. Even for the teacher, faculty development. And that is because he has developed a very good mechanism of evaluation. And that evaluation speaks for itself. So nobody can have any grudge for that. If a method of examination is very objective, then nobody can complain that I have been given low marks by the teachers. So here also you should be very clear that if all of you want good grades, you may all get good grades, but that has to be justified. And the expectation is that the objective of this one more is that you should choose research as a career. That is also a very important aspect of this STRIDE program itself. The reason is that research is a tough line. After doing MBA, people can get a job at the age of 22, 23 or so. But one has to spend several years to get a good career. So, a lot of very talented people were not coming in the research field. And that is a reality. And it has always been said that what is the best grade you need? In research you need the best grade. Because you are not given any defined work as such. Research means developing new knowledge. So when you are talking of new knowledge, you have to be very thoughtful. You have to be very inquisitive. You have to be very systematic. You have to have a lot of perseverance, patience, especially in sciences. There is a lot of patience. And all good scientists used to spend not only hours but days in their laboratories. Days. So that part was often lacking because I said ultimately everybody learns and studies for a good career, for a good life. And in research, these problems have always been there. In other countries, there are very good research opportunities, but in India, unfortunately, so far not. But in the new education policy, they are focusing on new researches. Why they are focusing? Because every economy is developing, every country is developing. But who are developing fastest? Who are developing good knowledge?
they are developing fastest. And even economists have realized, not now, 30 years back, the new growth theory, if some of you are here know, the new growth theory, before the new growth theory, it used to be said that those who save more and invest more, those economies will grow faster. But the new growth theory said no, those who innovate, those who develop knowledge, those who develop technology, their growth rate will be the fastest. And that was proved also. So it is very essential that new knowledge should be developed, innovation should be there, invention should be there. And that is the focus of the STRIDE program, that good students should choose a research career. Although it is difficult, I have myself said it, but still the expectation is that their contribution in the growth of the country or the growth of an economy will be the most important. And that can be developed when you are given such a training. In the formal education, there are several limitations, I have said, in terms of the faculty, in terms of system, in terms of difficulties of meeting the deadlines of the examination and all those. And that is why it was said that we should have something out of the formal education. It should be in the education system itself. And many of you are doing your final year projects here also. That's very true. So it joins both. So this was the purpose for which STRIDE was there. This was the objective with which the first batch was started. I hope quite successfully, although the problems were there. All the participants who are there, they are saying good things about it. There may be some limitations also. I am not saying that we don't have any limitations. There may be good limitations also. But there are no limitations on good intentions. And that is why I hope that first batch, including the opportunity to publish papers, that was also very good. We thought about it and we said go ahead. They made the presentations just like seminars held. The students made the presentations, many of that has been published also. So on the whole, the first batch has been very successful, and I hope the same thing for the second batch. I am seeing lesser numbers, that disappoints me. If the 50 are there, then all those 50 should be present. Maybe sometimes somebody has a special reason. Because your commitment is shown through your presence. It is not that I am very committed but I am sitting at home. Even if you are learning something, you are missing the peer learning. When you learn in a group, when the questions put up by one is the question of many, but only one speaks. So those are very essential things. So I will ask Lokush to tell others, be present or not very strictly. We may have some flexibility, as I always say. If there are some very genuine reasons, it is okay. But I will hear. If there are some very genuine reasons, that may be okay. But if there is no genuine reason, one should be present here. And that is why you have come. Because we never said that you will keep getting this degree or that diploma. A certificate of participation, your research outcome, your personality, development, your inquisitive mind, all those things, that will be there. And I think all those things will be more important than the degree that you see. Of course, you are studying somewhere, you will get the degree. But the experience here that you will get, I think later in life, you will realize that this is more important than the degree that you receive. I think with these words, I wish you good luck, because the lecture on education policy will take much more time, so I thought some other time I may take that up. Okay, thank you. Thank you so much, sir. So
कुछ हमारे जो पहले बैच के कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको चूँकि हमने इनवाइट किया था कि ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आपके कर्तव्यों से उनको सर्टिफिकेट प्रदान किया जाए। तो सिर्फ एक आई थिंक 2 या 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट ही यहाँ पर आ पाए हैं। तो मैं एक मिनट yes, yes, only who are present here. So first of all, I would like to invite Radha Ahiwal. She is the student of zoology. She is completed. Yes, please come. The next student is Miss Nancy. She is the student of MSc Biotechnology. She did dissertation with me. Miss Nancy, please. Next is Mr. Rohit Kumar Vishwakarma. He is a student of chemistry, and Mr. Rohit Kumar Vishwakarma has been the best paper presenter also in module 4. So he has got the second certificate also. I mean he is having 2 certificates. एक best paper और एक जो है उनका, तो he has been very serious candidate and very regular also. One of the regular candidates of the first batch. He did his dissertation with Dr. Prakash. And next is Miss Pallavi Jain. Again, she is a student of chemistry and she has also been a very regular candidate for the batch 1. And next is Mr. Surendra Kumar Pal. Surendra Kumar Pal is from the agriculture department and he from the soil science. As he showed, he was not chosen the dissertation. पर हमारे साथ जुड़ने के बाद इनके साथ किया डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी के साथ आपने जगह रिजर्वेशन किया। सो और कोई पहले बैच के यहाँ पर उपस्थित किया सभी 5 स्टूडेंट को गाइड किया। मुझे लगता है मैम को मेरे बच्चों का आईबी का टेस्ट है तो वो सब तो मैम को हम मिस्टर मोहित वाधवानी, Miss Divya Terak, Miss Akanksha Bharadwaj, Miss Arushi, and one more student is Divyanshu Krishnamoria. Total 5 students are there. Sir, guiding so many students is a very hilarious task. Thank you, ma'am. इसमें सर 2-3 चीजें जो करी हैं वो ये कि 4 मॉड्यूल हैं। हमारी सर प्रैक्टिस रही है कि जिस मॉड्यूल में जो क्वेश्चन नहीं रहा हमने उसको क्रॉस लगा रखा ताकि उनको पता चले कि वन शुड नो कि आप किसमें आए किसमें नहीं है। तो हम ये रेगुलर प्रैक्टिस रही है हमारी। और दूसरा सर इसमें कुछ जैसे सर देखिए हमने ये इनका स्टाइल का रजिस्टर नंबर है प्लस QR कोड तो हमने सेफ्टी फीचर भी मेंटेन किए हैं ताकि कोई इसका जो है वो गलत फायदा ना उठा पाए। ये तो मैं पहले ही आपने मैं अब हमारे डीन सेक्रेटरी साइंस सर से अनुरोध करूंगा कि सर को जितने भी सर के एफर्ट्स जितना भी सर का मार्गदर्शन रहा है उन सब के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने करते हैं। लकुश जी ने बिल्कुल सही कहा और जितना भी हम इसकी कहें तो कम ही रहेगा। सर हमेशा हम लोग की सभी की
मैं अकेले की बात नहीं कहूँगा, पूरा विश्वविद्यालय जैसे रामवीर जी ने कहा, इसकी एबल गाइडेंस की वजह से इम्प्रूवमेंट रिसर्च सेल में, रिसर्च प्रोजेक्ट्स में हर जगह है। और इसका नतीजा ये है कि सर इट्स काइंड इनफ टू अस, वो हमेशा हम लोग का समय दे देते हैं और इतना ही जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा ही देते हैं। और कई बार इसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कई बार जो है डिले हो जाता है काम की, जो प्रशासनिक काम में जो है, और इसमें भी जो समय दे देते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारा डिग्री सेक्शन जो यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी होल्डर्स और आपके जितने भी यहाँ से जो पास आउट बच्चे हैं, सबके डिग्रीज में विशेषज्ञ लगते हैं, मोहर का जो लग जाते हैं, साइन का, सिग्नेचर का। और सार ही ऐसे है, समय देते हुए वो भी ऐसे नहीं पूरा लाओ साइन कर देता हूँ, मोहर जी एक पढ़ के सुनाते हैं और देखते हैं इसमें स्पेलिंग में गलत तो नहीं है। और आप समझ लीजिए आई यूज्ड टू सी समटाइम्स, मैंने कल परसों की ही बात है, अराउंड जो है 110 हमने गिनती किया है, सिग्नेचर किया है बैठ के। तो आप समझ सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर करियर, फॉर द एजुकेशन। और आप लोग ये भी सुना होगा आप लोगों ने और देखा भी होगा कई लोगों ने, विभाग में जा करके, मैनेजमेंट विभाग में, इकोनॉमिक्स विभाग में कुछ जाके सर पढ़ाते हैं। तो आप समझ सकते हैं एज ए प्रोफेसर जो हम लोग मानते हैं एज ए वीसी से ज़्यादा, और एज ए वीसी होने के नाते हम लोगों को गाइडेंस मिलता है, हम लोगों को हेल्प मिलता है, चाहे हमारा रिसर्च की प्रॉब्लम्स हो, चाहे हमारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे हमारा एजुकेशन में जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की प्रॉब्लम हो। अभी सर ने जो कहा है, इसमें इक्विपमेंट्स की बारे में जो बात कर रहे थे, इसमें ये भी मैं ऐड करना चाहूँगा। हम लोग की एक कई रुशा की प्रोजेक्ट में कुछ पैसा है, इसकी वजह से हम लोग करीब आप लोगों ने सुना होगा SS वो भी ऐड होने जा रहा है इसी फरवरी एंड या मार्च फर्स्ट वीक में। SS, SPLC, FTIR तमाम न जाने, तो इक्विपमेंट्स की कमी नहीं है। और इसकी एक्सपीरियंस जो हम जो लेके आ रहा है सर का इन्वेस्ट करने का, हम लोग का इन्वेस्ट करने का मकसद एक ही है, वो आप लोगों को ट्रेन करने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए है, आप लोगों के बेनिफिट के लिए है, और यूज करने वाले आप है और आप ही के ऊपर है। एंड सर ने जैसे कि कहा है, हम ऑलवेज यंगर जनरेशन के साथ इंटरेक्शन रहते हैं। आप लोगों की मंशा, आप लोगों की इच्छुक, आप लोगों की इंथुसियाज्म को हम लोग कोशिश करते हैं इसको उसी एरिया में हम भी इनोवेटिव आइडियाज के साथ इसमें काम करें, नए नए इक्विपमेंट्स लाएं, क्योंकि साइंस आज की तारीख में बेस्ड ऑन, जैसे कि इवन इन द इकोनॉमिक्स ऑल्सो, पहले सारे जो कहा है, पहले तो इन्वेस्ट आप ज्यादा करोगे ज्यादा रिटर्न पाओगे, अभी वो पॉलिसी नहीं रहा। सारे जैसे कि कहा, आप इनोवेटिव आइडियाज होना चाहिए, आपको वेल इक्विप होना चाहिए, देन ओनली यू कैन ग्रो। तो इसी तरह से रिसर्च में भी वही है, और साइंस की फील्ड में अभी इंटरेक्शन से सो मेनी थिंग्स, क्योंकि सोशल कोज के लिए हम लोग हैं, तो इसमें इंटरेक्शंस बहुत जरूरी है। बट इन द फील्ड ऑफ साइंस अगर की बात करें तो हम लोग इक्विपमेंट्स बेस्ड ही है। तो हम लोग की इक्विपमेंट्स, नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसमें आप लोग अवेयर रहिए, इसकी यूजर फ्रेंडली रहिए, आप सीखिए, और फॉर द बेटर सोसाइटी के लिए, आप स्पोर्ट्स के लिए इसको आप योगदान दीजिए। With these few words, I again thank you so much for giving time here. Thank you so much.